तकरीबन 2 हफ़्ते पहले जब यूएस ने वापस ईरान पे अटैक शुरू किए थे, उस टाइम पे हमारा क्रूड था $70 पर बैरल पे। आज शुक्रवार शाम तक वो आ गया था $96 पर बैरल पे, 100 का मार्क टच करके। स्टिल इट्स राइज ऑफ अराउंड 40% इन द प्राइस इन द मैटर ऑफ जस्ट 2 weeks, and that led to a fall in Nifty by around 600 points, but is nothing but just 2.5% decline. Why the decline is less? Because markets always believe that this could be just a small escalation between the two countries, and it will eventually go back to the peace negotiation table. ऐसा कुछ फ्राइडे को हुआ भी, कुछ इंडिकेशन आए कि ओमान वगैरह बीच में अब इंटरवीन कर रहे हैं, एंड अगेन दे मे बी पॉज इन द एस्केलेशन. However, all these problems are leading to a slow death of the growth of the economies, including India as well, because स्ट्रेट ऑफ हार्मस बंद है फिर से, और शिप जा नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से तेल की सप्लाई में डिस्ट्रप्शंस रहे हैं, और ये जितना टाइम रहेंगे उतना इकॉनमीज़ को धीरे धीरे करके जाके डिस्ट्रॉय करेंगे. So technically what we now see is that this is an hourly chart that we are trying to claw back into the range of 24200 to 23800. अब हमको देखना है कि क्या फर्स्ट आवर में हम इस लेवल 2800 के ऊपर रह पाते या नहीं रह पाते. अगर हम आज का दिन लार्जली इसके ऊपर स्टे कर गए तो देन वी आर बैक इन दिस रेंज. Otherwise, I think I can see that there is a great degree of risk that we may again slip below this range, and if this happens, then I think we'll go to daily chart to see where we may head to. If I look at daily chart now, it took a right kind of technical support on Friday from the levels, but this level of 23600 is under threat. And if this happens, I think we may slowly claw back, to the levels of 23400 से लेके 23200 के रेंज में, जहाँ हम पहले हम काफ़ी टाइम बिताया है. तो this will not be a good scenario. So as a trader, what I have to do is I have to look into the first couple of hours in the market today. If market is able to sustain about 23800, I can try and hope that it goes back into this range and we may attempt long. अगर ये स्लिप होना शुरू होता है तो I think there is a possibility that it may go back to 23400 eventually, so we can attempt short. This is the whole my analysis of how Nifty may fare today. With this, thank you very much. Have a good trading day.